बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोमिन इंग्लिश अकेडमी। सो गाइस, आज के बेसिक इंग्लिश ग्रामर क्लास 11 में हम आप लोगों को टेंस के बारे में पढ़ाएंगे कि टेंस क्या है, व्हाट इज़ टेंस। सो गाइस, हमारे साथ रहे। आगे भी इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी और समझाएंगे टेंस को। सो हमारे साथ रहिए। व्हाट इज़ टेंस, द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ टेंस। टेंस क्या है, द डिफिनेशन। Tense has been derived from a Latin word tempus, which means time or age. Tense has been derived from a Latin word tempus. Tense लातिनी ज़ुबान से अख़ज़ किया हुआ एक लफ्ज़ है जिसको लातिनी ज़ुबान में कहते हैं tempus. Tempus. Tempus का मतलब क्या है? Which means time or age. Tempus का मीनिंग है, मतलब है वक्त या ज़माना। So ये हो गया tense का definition. So दोस्तों, tense has got three branches. Tense has got three branches and every branch has got four branches. Tense के तीन शाखें हैं जो कि हर शाख के चार शाखें होते हैं। वो दर्जल है। These are followings. Tense has got three branches: the present tense, the the past tense and the future tense. फ़ेल मुतलक और फ़ेल माजी और फ्यूचर मुस्तकबिल। सो द गाइस, टेंस हैज़ गॉट थ्री ब्रांचेस। टेंस के थ्री ब्रांचेस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड एवरी ब्रांच हैज़ गॉट फोर ब्रांचेस। और हर शाख के इन तीनों में से हर शाख के चार शाखें हैं, वो दर्जैल हैं। सो दोस्तों, द प्रेजेंट के जो फोर शाख है, द फर्स्ट वन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम फ़िलहाल मुतलक कहते हैं, एंड द सेकंड वन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ़िलहाल जारी कहते हैं हम, और द थर्ड वन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड द फोर्थ वन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड द पास्ट टेंस, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, the past continuous tense, the third one the past perfect tense, and the last one, the fourth one, the past perfect continuous tense. The future indefinite tense, the future continuous tense, and the future perfect tense, and the future perfect continuous tense. So ये तीनों शाखों के चार शाख हो गए। So guys, तीनों के कुछ आपको जनरल फार्मूलाज बता रहा हूँ। In every tense, in positive sentences, first of all, subject and helping verb or modal auxiliary verb if there is any, and then verb and object and full stop. तमाम टेंसेस के सादा जुमलों में ये कुछ जनरल फार्मूले आपको बता रहा हूँ जो आपको जहन में रखने हैं, आगे इंशाल्लाह क्लासों में आपको मुफीद और फ़ायदेमंद होंगे। सो तमाम टेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर हो सेंटेंस में, फिर उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। And in interrogative sentences, all the tenses, in present, in past, in future, all the tenses, first of all, in interrogative sentence, first of all, helping verb, and then at the end of the sentence, question mark come. And in negative sentences, all the tenses, in negative sentences, first of all, first of all, subject, then helping verb, then not. In all the sentences, all the tense in negative sentences not come after the helping verb and the last full stop. सो गाइस, ये हो गए जनरल फार्मूलास और टेंस का डिफिनेशन। सो इंशाल्लाह कल की क्लास में आइंदा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करेंगे क्लास। सो हमारे साथ रहिए। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।